Assalamu alaikum. We are putting our class. We are putting this class for work power energy. This is paper 2 version. State what year number है November 13, 21 का 3. वालेकुम अस्सलाम. आप लोग पहले क्वेश्चन का ईयर नंबर नोट कर लो. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन. वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स and work is the product of the force and the distance in the direction of the force. A trolley of mass 400 gram is moving at a constant velocity of 2.5 to the right as shown. Show that the kinetic energy of the trolley. सवाल apparently तो बहुत सिंपल सा लग रहा है और आप पहले कोशिश करो कि सवाल आपको आपकी बुक में मिल जाए. ये वर्किंग है, कैलकुलेट करके दो. आंसर आ जाए तो मुझे बता दो. ये शो करना है.
The trolley in B moves to point P as shown. The point P, the speed of the trolley is 2.5 meter per second. A variable force X to the left on the trolley as it moves between points P and Q. हाँ 1.25 गुड. इसका आंसर इन्होंने सजेस्ट किया है 1.25. इट्स अ गुड कंट्रीब्यूशन. और इसको राउंड करके ना फिर 1.3 कर दो. अब हम इस ग्राफ वाले क्वेश्चन पर आ गए. मैंने आपको स्केचेस में, जब मैंने आपको स्केचेस करवाए तो मैंने आपको स्केचेस में दो बातें सिखाई खास तौर पर. एक तो जो स्केचेस होते हैं उनको हमेशा ग्रेडियंट से कंट्रोल करो, और दूसरी चीज अगर ग्रेडियंट से कुछ ना निकले तो एरिया से कंट्रोल करो. अब पढ़ो. द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट क्यू. जो लोग थोड़ा लेट आए वो ये मैच कर लें कि हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं. अगर ये क्वेश्चन आपको रीड एंड राइट वाली बुक में या आपकी पास पेपर की जो भी बुक है उसमें मिल जाए तो पहले उसमें निकाल लें. जो डिस्टेंस होगा जो डिस्टेंस होगा वो इस ग्राफ का एरिया होगा. ये मुझे कैसे पता? क्योंकि एरिया होता है y और x का प्रोडक्ट. अब मैं रखता हूं F इंटू एक्स. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है वर्क डन. पहले हमें निकालना है, पहले निकालना है डिस्टेंस. हमें वेलोसिटी दी हुई है. एरिया जो है इसका वर्क डन है. इसका जो एरिया है वो वर्क डन के बराबर है. अगर आपको क्वेश्चन मिल गया है तो अपनी बुक में सामने रखें. अब आपको ऊपर जो है आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी निकली हुई है. देखो आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकली हुई है 1.25. जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको पता है. ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी मैं यहां ले आता हूं एरिया, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू वर्क डन. तो मैं एग्जामिनर को कहता हूं कि देखो एरिया इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स. अब मुझे एरिया पता है, वो वर्क डन पता है 1.25. मुझे फोर्स की जो वैल्यू है वो पता है. अगर तुम इसको यहां तक रीड करो, अगर तुम फोर्स को यहां तक रीड कर लो तो दिस वैल्यू इज 14. तो अब फॉर्मूला लगा दो इसके साथ. मैंने एक हाफ लगाया. कोई बता सकता है व्हाई आई हैव पुट अ हाफ फॉर द एरिया? मैंने एरिया की इक्वेशन में हाउ कम आई नो अबाउट 1/2? One student gave the right answer that 1/2 is due to triangle. So मैंने 1/2 लिख दिया. मेरे पास force is 14. I put 14 and x I have to find. I made a partition.
आप इसमें x को सब्जेक्ट बनाओ और ये वाली कैलकुलेशन कर दो। The people who have just joined, I want to remind that we are doing November 2013. The topic is work energy power, which I always say कि हमें topical past papers जो हैं वो सबसे important होते हैं और तुम्हें मेरे चैनल पे ज्यादातर topical past paper मिलेंगे. November 2013 paper is 21, question number 3, and we are doing it's part number we are doing part number C1. अब हम C1 पे रुके हुए और इस कैलकुलेशन को कोई परफॉर्म कर दे. Yes, this is the reason here. एरिया इज द एक बच्चे ने पूछा है कि एरिया वर्क डन क्यों है. लेट्स क्विकली डिस्कस इट अगेन. एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ y and x. Y axis is force, x axis is distance. So area is equal to force into distance, and force into distance is work. That is why I have declared area as work. स्केचेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सीआई का और बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेपर में स्केचेस परफॉर्म करना. स्केच द वेरिएशन विद एक्स with distance of velocity for the trolley moving between P and Q. The question is about a trolley. Look, this is a trolley and it is moving between 2 points P and Q. The trolley has traveled some distance x. Now this is a sketch. Examiner is giving us an idea that there are options for going in negative, but the trolley has not changed its direction. देखो velocity negative कब होती है? जब तुम डायरेक्शन को चेंज करो, लेकिन तुमने डायरेक्शन को चेंज तो किया नहीं, ट्रॉली तो सीधा सीधा जा रही है. तो अब ट्रॉली की स्पीड कितनी थी शुरू में? अगर तुम क्वेश्चन यहां से पढ़ो, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, a trolley of mass 400 gram is moving at a constant velocity of 2.5 meter per second to the right. हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली. ट्रॉली इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. उसके बाद he has mentioned at point P the speed of the trolley is 2.5. The trolley comes to rest at point Q. अगर ट्रॉली रेस्ट पे आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 0. सो मुझे 2 पॉइंट्स तो मिल गए. आई शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर and I have to reach here. How come I know I have to touch the x-axis? Because trolley has been brought to rest. So मुझे ये तो पता चल गया. अब 2 पॉइंट्स के दरमियान ग्राफ बनाने के मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं. ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 रख लो और ये ऑप्शन 3. 1, 2 और 3. अब मुझे सोचना है पेपर में कि यहां कौन सा वाला शेप होगा.
I have shown you, I have done some working to explain how I can manage such sketches. Now, the point is there, be careful that there is a formula. I have done a working, और मेरा जो expression बन रहा है वो square के साथ है. अब मैंने कुछ बेसिक स्केचेस आप लोगों को कॉपी करवाए थे और मैंने आपको ये समझाया था, और जो लोग मैथ्स लेते हैं ओ लेवल में भी मैथ्स कर चुके हैं, जाहिर है सभी कर चुके हैं, और जो एड मैथ्स लेते हैं खासतौर पे उनको तो ये ज्यादा पता है कि जब हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उसमें एक्स और वाई पे पावर नहीं होती. मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, बड़े गौर से समझिएगा. सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता हमेशा, कॉन्सेप्ट मैटर करता है. अब जैसे मैं एक लाइन यूं बनाऊं, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स मैथ्स में ना, और अगर मैं यूं बनाऊं तो इसकी होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, remember this concept that whenever there is a power on a variable, it should be a curve. I repeat my concept. A linear equation, देखो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है. इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है. और तुम्हें याद रखना है कि अगर इक्वेशन में पावर आ जाए, जैसे इस वक्त v पे स्क्वायर है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती. अ स्क्वायर फंक्शन, अ पावर्ड फंक्शन ऑलवेज गिव अ कर्व. अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो तो तुम्हें बहुत एडवांटेज होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम इसको संभाल सकते हो, क्योंकि जो कर्व्स होते हैं वो किसी पावर इक्वेशन से क्रिएट होते हैं. मैंने नीचे 2 एग्जांपल्स भी दी हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं कुछ स्केचेस ग्रुप पे शेयर कर दूं, ओ लेवल मैथ्स वाले, ताकि तुम उसको फिर जरूर याद कर लो. अब इसमें 2 और 3 में ऑप्शन है. 2 और 3 में फर्क ये है कि 2 का मतलब है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट और 3 का मतलब है डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. टू और थ्री में ये फर्क है कि 2 का मतलब है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, ये जो ऊपर वाला बना हुआ है, और इसका मतलब है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, और इसका मतलब है, ये सब मैंने आपको जब हमने स्केचेस करे थे, सो वी हैड डन दीज कॉन्सेप्ट्स देयर. दिस इज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. स्केचेस आर ऑलवेज वेरी ट्रिकी, एंड मैंने आपको समझाया था कि छोटी छोटी 8-10 चीजें हैं वो याद कर लो. ग्रेडियंट, एरिया, शेप, increasing gradient, decreasing gradient, parallel to x-axis, parallel to y-axis. So these 8 to 10 points I had explained, and these are decisive in managing on nearly all the sketches. चलो, अब तुमने इसको यहां तक देख लिया. हमें ऊपर से पता है कि force is increasing with displacement. Force and displacement are directly proportional. तो अब ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी कम तो हो रही है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीजिंग रेट से कम हो रही है, क्योंकि उसमें आपने ट्रॉली को रोकना है. अगर आपको ट्रॉली को रोकना है तो आप उसकी वेलोसिटी को कम करते जाओगे, एंड एट अ पॉइंट यू हैव टू स्टॉप द ट्रॉली. इसलिए आपको ये वाला ग्राफ सेलेक्ट करना होगा which shows increasing gradient. We are starting November 13. If you have a book, please take out the question in the book. November 13, paper 23, question number 4. Distinguish between gravitational potential energy and elastic potential energy. It is giving us, he is giving us 2 marks. Whenever you come across a theory question, I always prefer and I'll always emphasize to my students that always look for examiner report rather than going directly to marking scheme. मार्किंग स्कीम में क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर मिल जाता है और तुम्हें सोचने का उसमें स्कोप नहीं रहता. जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं. Remember this concept
that potential energy is the stored energy in a system. It is always due to some work done. So when you go upstairs चढ़ के ऊपर गए, you do some work against gravity, that becomes gravitational potential energy. You compress a spring, you have to do some work, this becomes elastic potential energy. कोई भी potential energy हो, उसके पीछे जो चीज होती है वो होता है वर्क डन. मैंने आपको समझा दिया. November 13, 23. Let me open its examiner report. We are doing November 13 and we are doing 23. Elastic potential energy. Elastic potential energy was usually explained satisfactorily in terms of energy stored in an object due to deformation. When considering gravitational potential energy, the majority made a reference to an object rather than to energy stored in a mass. अब देखो एग्जामिनर रिपोर्ट का फायदा क्या होता है कि वो मिस्टेक्स भी बताते हैं, एक्सपोजर बताते हैं, and they actually comment on the question. This is why marking scheme के contrast में examiner reports are very helpful. There are three major helpful documents in our camera system. One is marking scheme, which everyone use. Examiner report, they actually are the great changers. Some people use it, some people do not bother going there. And the third document is called student response booklet. It's a very powerful document which shows high grade solution, low grade solutions. So ये तीन documents ऐसे हैं जिनको जरूर टाइम दो. मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया था. देखो मैंने बताया कि potential energy is the energy which is stored in an object due to work done. Now the work done varies. If you do work in a gravitational field, the energy is gravitational potential energy. If you do a work in compressing a spring, you call it elastic potential energy. So अब आप आंसर क्या लिखोगे कि gravitational EP is due to work. Gravitational EP is the stored energy due to work done on a mass in a gravitational field. Elastic potential energy is the stored energy in an object due to deformation. This is the contrast. A ball of mass 65 gram is thrown vertically upward from ground level with a speed of 16 meter per second. Air resistance is negligible. It means air resistance अगर neglect कर देना तो फिर acceleration जो होता है वो ये क्वेश्चन है नवंबर 13, 23, 4. कैलकुलेट फॉर द बॉल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. आपको हैबिट डालनी है फॉर्मूला लिखने की और उसके साथ पार्टीशन करने की. आई एम पुटिंग द फॉर्मूला एंड आई एम showing mass 65 upon 1000 into 16. And then I will put a partition. Now, anyone can solve for me for this calculation part? Anyone can calculate for me, please? $8.32. Now, whenever you solve a question in A level, numerical, you always have to remember the significance
of significant figures. The question says 65, the question says 16, which shows two significant figures are engaged. So I will write it 8.3. अगर तुम इसको फॉलो नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, but that will be a negative impression for you. अच्छा, then he says find the maximum height. Remember the concept that velocity becomes zero at maximum height. So I have launched it in this form. The velocity is 0 here. Initial velocity is 16 and it is going upward. So I'm taking A is equal to minus G and I need to find height. I have everything in my hand and I will write down the formula. 2AS is equal to V square minus U square. Then I will say 2GH is equal to V square minus U square, and you have to find the height. So you will take V square minus U square upon 2G. Put the values and here the solution. Put the values and get the height. Because it's going upward, beta. So when an object is going upward, its acceleration is negative. The answer people are telling me is 13.05. So I will round it to get it as two significant figure. The ball takes time t to reach maximum height. For time t upon 2 after the ball has been thrown, calculate the ratio potential energy of the ball and kinetic energy of the ball. These questions are always tricky because they're asking to make a ratio. This is the ball and this is the final position. So obviously when you say t upon 2, you are talking about a time, half of the time. It's not necessary the object is moving because air resistance is not there, but object is not moving at a constant speed. We do not know the height. We suppose that the height is h. This height is h, the potential energy, and he says the ball takes time to reach maximum height. So the maximum height is in time t, and we need to make a ratio for potential energy of the ball upon kinetic energy of the ball. Now he's giving us 3 marks. It means calculation is there. Remember to do partition when you come across a longer calculation, and remember to show formula always. So potential energy is mgh and kinetic energy is half mv square. Now I have to find a ratio approach here. Now in time of t upon 2, I do not know the time, the total time. One possible way is that कि मैं ये करूं कि पिछले वाले पार्ट का डेटा लूं और वहां से टोटल टाइम निकाल लूं. टोटल टाइम निकाल कर उसको हाफ कर लूं, हाफ करके पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, हाफ करके काइनेटिक एनर्जी निकालूं और रेशियो बना दूं. दिस अपीयर्स टू बी अ लॉन्गर रूट, बट आई कैन डू इट कंफर्टेबली बिकॉज ऊपर डेटा है मेरे पास ना. I have the maximum height, it is 13 meter. So अब तुम लोग इसको एक हिंट करो मेरे लिए कि मुझे क्या करना चाहिए. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड टी. ठीक है, ऐसा करते हैं कि पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं एंड वी हैव द डेटा. अगर आप चाहो तो आप टाइम निकाल लो. टाइम इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a
final velocity was 0 and initial velocity was 16 and it was 9.8 minus में and find the time. चलो पहले time निकाल के मुझे दे दो. Anyone can show me the time for me? Point 016. Some people are getting 1.6. 1.6 तो नहीं आएगा. हाँ 1.63. 1.63 कैसे आ रहा है? 16 अपॉन, हाँ 1.63. अगर राउंड करना करें तो ठीक है फिर ना. 1.63 it is minus 16 upon minus 9.8. ओके 1.63 ले लिया मैंने. तो अब हाफ टाइम कर दो. हाफ टाइम इज 1.63 अपॉन 2. इसको डिवाइड बाय 2 करके और फिर आप इस वैल्यू को यूज कर लो. .815. Good. So now find the velocity at this time. V is equal to U plus AT, and I'm finding the velocity. U was 16 plus 9.8 into 0.815. This will give me the velocity. Velocity निकाल लो. So velocity is coming 8. Now this is the biggest clue we were looking for. It means after half time, velocity has become half. It was 16 and now it becomes half. Now you have to understand a technical concept, half mv square. If I half the velocity, look, if I half the velocity, the actual amount becomes 1/4. It means kinetic energy is 1/4. So from this calculation, kinetic energy is 1/4. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो रेशो में बड़ा हेल्प करता था ओ लेवल में, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चीज 1/4 है, उसका एक सेगमेंट 1/4 है. आई शो यू हियर. If one segment of an object is 1/4, the other segment would be 3/4. As the ball is going upward, the kinetic energy is converting into potential energy. So potential energy will be equal to 3/4. Now if you make a ratio, 3/4 upon 1/4, you will get 3.
Now, this part was really tricky and it was a challenging part. They put deliberately such parts to differentiate smart students. State and explain the effect of air resistance on the time taken for the ball to reach maximum height. कह रहे अगर air resistance consider कर लेते हैं, if we consider air resistance तो क्या फर्क पड़ेगा? हम ऐसे, this is a theory question. So whenever you come across a theory question, you should always try to look for examiner report. The most common answer was to assume that air resistance would slow down the ball, thus giving a longer time to reach the same maximum height. Few appreciated that air resistance would give rise to a greater retardation, thus leading to a shorter time before ball comes to rest at a reduced maximum height. Now, this is a very nice explanation of a challenging concept. Let us discuss this concept. If I get a space, yes. Now, I had thrown the ball upward. The ball had reached up to here. There was no air resistance. In presence of air resistance, examiner report is saying that the ball will reach a reduced maximum height. It will distance will decrease kinetic energy more rapidly. This is where examiner reports are very helpful. So if you read from this part to this part, this is very nice to understand. Air resistance would give rise to a greater retardation, thus leading to a shorter time before the ball comes to rest. So the ball will come to rest quickly, but it will not reach the same height. If air resistance is present, the ball will not reach the same height. June 14, 21, 2. Define power. ये simple है. Power is the rate of doing work. Use your definition to show that power may be expressed as the product of force and velocity. He is talking about a formula P is equal to FV. मैंने इसकी derivation आपको क्लास में कराई थी. Power का formula होता है work upon time. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आई कैन रीअरेंज द फॉर्मूला एंड I can rearrange the formula and I can write it F into D upon T. Displacement upon time is velocity. This is a small, simple derivation of this formula. A lorry moves up a road that is inclined at 9 degrees to the horizontal. The lorry has mass 2500 kg and is traveling at a constant speed of 8.5. The force due to air resistance is negligible. Calculate the useful power from the engine to move the lorry up the road. Whenever you come across a question which is in inclined plane, remember inclined plane पे हमेशा resolution करना पड़ता है. So I am resolving here and I have a resolution factor here. One component come here. This is mg cos theta and this one is mg sin theta, and there is a force upward R. अब जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, the force which is pulling the object upward, I want to show that this is the force and I'm writing F is equal to P upon V. So I have made a whole diagram. This is a diagram which is very important to understand, very important to use. As the object is going at a constant speed. So upward force is equal to downward force. Useful power from the engine. So agar object is moving at a constant speed, so I will write P upon V, the upward force is equal to mg sin theta. I need to find power. So I will move the
velocity on the other side, mgv sine theta. Make sure always in your CI paper that your calculator is in degree mode. So I have the data now. Mass is 2500. Then I made a partition. Now, can anyone help me to find the power here? P upon V, Ali, P upon V, you can look here. P upon V is equal to force. Force is upward and this force was downward. When something is moving at constant speed, forward force is equal to backward force. Remember this rule, it is equilibrium. When an object is moving at constant speed, upward force is equal to downward force. One student gave me the answer 32600. Okay. Anyone can help me further? I got 32600 watt. So I can take it 3.2 कर लेता हूँ, 3.2 kilowatt. $32.6. So I can make it 33 then, because the question is asking. So I have rounded it. State two reasons why the rate of change of energy, and I had explained it in my class regularly, that देखो जब ये बोलता है rate of change of energy, इसका मतलब असल में energy नहीं होती बल्कि it means power of the lorry is equal to the power calculated in part 1. Now you have to understand this concept again, क्योंकि work power energy का जो chapter है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है. when something is moving upward at a constant speed, there is no change in kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है, तो फिर ऊपर जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. इंजन की जो फोर्स आएगी, जो पावर आएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगी. एग्जामिनर ऑल्सो हैड गिवन कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, उसको उसने हटा दिया था, और कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं दी उसने. तो अब इसका मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द पावर. जो गाड़ी की पावर है वो सारी की सारी किस में जा रही है? पोटेंशियल में. क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग, and the lorry is not facing any resistance. So actually the lorry is not consuming any power against the resistance. So there is no resistance, there is no change in kinetic energy. So the power you have calculated is converting into potential energy. इसने इसके दो रीजन मांगे, आप दोनों रीजन दे दो. आप लिखो नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, नंबर 2 एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, so it's not taking any share. Air resistance is negligible, there is no work done against air resistance, so power has only one conversion, that is into potential energy. Now we have done this question, we have discussed theory also, and we are keeping up to here. Inshallah we will continue in our next class. Allah Hafiz.